So children, we will study today bacteria and fungi and their economic importance. We will see what is given in your syllabus for this chapter. So we will study economic importance of bacteria, useful role of bacteria, means how are bacteria useful for us. So bacteria, they are useful for us in medicine, means in the medical field. We are getting the medicines in the form of antibiotics, serums and vaccines. In agriculture also, with the help of nitrogen cycle, we are going to understand the role of nitrogen fixing, nitrifying and denitrifying bacteria. In industry, the curing of tea, tanning of leather, and the harmful role of bacteria, where spoilage of food, diseases in plants and animals, and bioweapons. So today mainly we are going to study the first 2 points only, the medicine as well as agriculture. So what is bacteria? Bacteria is a prokaryotic cell. As you have studied in chapter 1 that the cells are of two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. And the basic difference in prokaryotic and eukaryotic cell is that prokaryotic cells, they do not have nucleus. Instead of nucleus, their nuclear material lies in the cytoplasm freely. So you can see here, as I said, that bacteria is prokaryotic cell, so its nuclear material is lying in the cytoplasm. You can see in the diagram here, and this nuclear material is known as nucleoid in the prokaryotic cell. This is a circular DNA. So there is no nucleus, cytoplasm is there, and other that cell organelles, which we say the double membrane cell organelles, are absent in it. And then extra chromosomal body is also found in the bacteria. This is plasmid. And ribosomes are also present. These ribosomes are of 70S type. And definitely it has a outer covering. This is the plasma membrane. Further, it is being protected by the other layers also. These are the cell wall and capsule. So composition of this cell wall and capsule, it may be varying in the different bacteria. And for the movement, that bacteria, they have flagellum. You see this long hair-like structure. This is the bacterium flagellum in order to move, and the cilia are also found in some of the bacteria. So this is the typical that bacterium showing all the features. So some bacteria, they may have the cilia, some other may not have. Means it is not necessary that all the bacteria, they have cilia or flagellum, but they are found in the bacteria almost. They help in the movement. They are varying in the shape and size. You know, they are being microscopic. Size is also varying, very minute in size, and they are not visible by the naked eyes. We are able to see the bacteria through microscope only. So they are microscopic organism. So this much information is enough for you for your next part, that what are bacteria. So bacteria, prokaryotic microorganisms, and they have the protective covering made up of capsule, cell wall and cell membrane, and have the cytoplasm and the nuclear material as the nucleoid. Know that nucleus is present in them, and the cilia and the flagellum, they are also found in the bacteria. Ribosomes, which are the proteins synthesis organelle, they are also found here. And the pili is also, you will see here the pili. This pili, they are assisting in the cell. These are the pili. They are assisting the cell in attaching to the other surfaces, which is important for the genetic recombination. So these are the general features of the bacteria. Now we will come to the main point, that is the useful role of bacteria. So we are going to study the useful role of bacteria in the medical field, that is in the preparation of the medicine. Next is agriculture, and the other point is the industry. So we will start our topic today, their role in the production of medicines. So there are three types of medicines you have here, and these are the antibiotics, serums and the vaccines. So many bacteria are used for the production of the medicine. They are involved in the production of vitamins also,
and medicine, serum, antibiotics, and vaccine. As per the syllabus, you need to study all these 3 points. Remaining point, no need to study. So antibiotic, what is antibiotic? So students, it is very clear from the name that anti and biotic. We will divide this term antibiotics in the two parts, anti plus biotic. Anti means against, biotic means the living organisms. So this is something which is against the living organism. What is this? This is a chemical actually produced by a living organisms which can prevent the growth of some disease causing bacteria. So here these antibiotics are the chemicals which are produced by the living organism, and they are preventing the growth of other disease causing organism. They are known as the antibiotic. So understood the antibiotics? The antibiotics, they were discovered first by Sir Alexander Fleming. So penicillin was the first antibiotic discovered in 1929 by Sir Alexander Fleming. And this term antibiotic, it was first coined by Selman Waxman in 1942. So underline this that contribution of the scientist, which is also asked frequently in the exam. So Sir Alexander Fleming, who discovered the first antibiotic, and this term antibiotic was coined by Selman Waxman. Now, production of antibiotics. So we will see the various types of that antibiotics we are obtaining not only from the bacteria, we are obtaining it from the fungi also. So first here we will see the penicillin. Penicillin was the first antibiotic which was isolated by Sir Alexander Fleming, and it was isolated from the Penicillium notatum. This Penicillium notatum is the fungi. Remember, this is the fungi. तो पहले जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को आइसोलेट किया था वो पेनिसिलियम नोटेटम से किया था, एंड देन आफ्टर this penicillin is obtained at the commercial level from the other species of the fungus, that is Penicillium chrysogenum. So Penicillium chrysogenum, it is also a fungus. From it penicillin is produced at the commercial scale. Now what is the role of this penicillin antibiotic? So this antibiotic is against the diphtheria and tetanus. So these disease causing organism which causes diphtheria and tetanus, against them this penicillin antibiotic works. Next is the chlortetracycline. Chlortetracycline here which is obtained from Streptomyces aureofaciens. This Streptomyces aureofaciens is a bacterium. So understand children that penicillin is obtained from the fungus. Chlortetracycline is obtained from the Streptomyces aureofaciens, which is a bacterium. And this antibiotic is working against the typhoid causing pathogens. It kills the pathogens which causes typhoid. Then streptomycin. This antibiotic also we are getting it from Streptomyces griseus. This is also a bacterium. And this streptomycin is working against the tuberculosis. So tuberculosis is caused by the pathogen, and that pathogen is killed by the use of streptomycin antibiotic. Next is the erythromycin. Erythromycin is obtained from Streptomyces erythraeus. This is the bacterium again. So you can see here there are 3 species of Streptomyces. Streptomyces is the genus of the bacterium, but there are 3 different species of this bacterium providing the different antibiotics. So erythromycin we are obtaining from Streptomyces erythraeus, and it is useful to treat the rickettsial fever. So these are certain antibiotics given in your book. So learn the name of the antibiotic. This is the source of the antibiotic, means the microorganism from which we are getting this, and these are the diseases against which these antibiotics are working.
Now the use of antibiotics. So what is the use? One use already we have studied that in medicine to fight the diseases, because they kill the disease causing microorganism. And these antibiotics, they are used as the food preservative also, to preserve meat and fish. So to keep this meat and fish safe for the longer time, these antibiotics are added to them, so they do not allow the development of the pathogens on the food, so working as the food preservative. In treating animal feed to prevent internal infection, yes, in animal feed means the food of the animal is also treated with the antibiotics, so they may not have any internal infections. So these are the uses of the antibiotics. Now next we are going to study serum. About serum, you have studied in the 8th class, where you have studied about the blood circulatory system, and you have studied that when the blood is allowed to settle, then a yellowish portion is separated from the blood, which is known as the plasma, and the cellular parts, it undergoes clotting, that is the red blood cells and other cells are there, and this is the plasma. So what is serum? So serum is a clear yellowish fluid obtained after separating blood into solid and liquid components after it has been allowed to clot. So जब हम ब्लड को की क्लॉटिंग अलाउ करेंगे, तो यहाँ पर जो है लिक्विड पार्ट प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है, और जो सॉलिड पार्ट है वो कोगुलेट हो जाता है लाइक आरबीसीज, और ये सेपरेट हो जाती है, और इसी प्लाज्मा से जो है सीरम को सेपरेट किया जाता है, एंड दिस सीरम डज नॉट कंटेन द ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर्स इन इट. सो जैसे कि फाइब्रिनोजन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्रोटीन जो है फाइब्रिन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है प्लाज्मा के अंदर, देन इट वर्क्स एज द सीरम. सो व्हाट इज सीरम? द सीरम इज अ क्लियर येलोइश फ्लूइड obtained after separating blood into its solid and liquid components after it has been allowed to clot. So what is the use of serum? Let me see here that the serum contains antitoxins. Now here again the meaning of the term antitoxin. Anti means against. Toxin means toxic substances which are produced by the pathogens in our body. Against them antitoxins are produced in the serum, and serum contains antitoxins. And this serum is injected in our body to build up resistance against the microorganisms or their toxins before the microbes actually enter the body. So इसी सीरम को क्या किया जाता है, सेपरेट करके और बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिसीज and the toxins also. So it works against the toxins also, against the microorganisms also. So this is the use of serum. It can easily neutralize or kill the bacteria. तो ये जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उनके थ्रू जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, और इन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को जो है किल भी करता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सीरम. नाउ जो प्रिपरेशन है सीरम की, दैट आई विल एक्सप्लेन यू कि सीरम कैसे प्रिपेयर होता है. सो फॉर प्रिपेयरिंग सीरम, स्मॉल डोज ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्लड ऑफ द हेल्दी एनिमल. So you will see here, this is the slide showing that how the diphtheria antitoxin is prepared. So here how the scientists they prepared this antitoxin of the for this diphtheria causing pathogens. So here scientists they grow diphtheria causing bacteria in the laboratory and harvest its toxin. So जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, जो डिप्थीरिया को कॉज करते हैं, उनको लैब में कल्चर किया जाता है, मतलब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है और उनसे उस टॉक्सिन को कलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि दे ऑल प्रोड्यूस दिस टॉक्सिन, और यही टॉक्सिन हमारी बॉडी में डिप्थीरिया को इंट्रोड्यूस करता है, कॉज करता है. तो ये टॉक्सिन को जो है आइसोलेट कर लिया जाता है, एंड दिस टॉक्सिन इज फर्दर इंजेक्टेड इनटू द हॉर्सेस विद दिस डिप्थीरिया टॉक्सिन. And as an immune response, the animal's body produces diphtheria antitoxin. तो जो यहाँ पर हमने टॉक्सिन सेपरेट किया, या साइंटिस्ट ने जो टॉक्सिन सेपरेट किया कल्चर से, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है एनिमल्स में, लाइक हॉर्सेस.
और इनमें इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा, जो हॉर्स की बॉडी है उस टॉक्सिन के अगेंस्ट फाइट करेगी डेफिनेटली, क्योंकि हॉर्स का भी अपना एक इम्यून सिस्टम है, तो उस टॉक्सिन के अगेंस्ट हॉर्स के ब्लड में एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे. So now scientists they collect the blood from the horses and separate out of the antitoxin rich serum. तो अब हॉर्स के ब्लड में ये एंटीटॉक्सिन होंगे, तो यहाँ से हॉर्स के ब्लड को कलेक्ट करके उसमें से एंटीटॉक्सिन को सेपरेट कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सीरम. मीन्स सीरम को सेपरेट किया जाता है, इस सीरम के अंदर ये एंटीटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं. And then the researchers they purify the antitoxin serum for the use of the medicine for people. So in this way that serum is prepared by using the animals, and the body of the animal produces antitoxins to neutralize the effect of toxin, and the blood of this animal is taken out and separated into the serum and the solid particle, and that serum is working as the that medicine. So this is the process of that formation or preparation of the serum. Now another example is the insulin, because nowadays we may use the genetically modified bacteria by producing human genes in it, like in E. coli. तो अब एक एग्जाम्पल और हम देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर ह्यूमन का जो इंसुलिन होता है उसका प्रोडक्शन होता है. यू नो द पर्सन दोज हु आर डायबिटिक, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है या सिंथेसिस नहीं हो पाता है. ऐसे केस में उनको इंसुलिन बाहर से सप्लाई करना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है. तो ये इंसुलिन कैसे प्रिपेयर होता है दैट आई विल एक्सप्लेन यू. तो इस इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, एंड दैट बैक्टीरिया इज ई कोलाई. सो ये ई कोलाई को जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे किया जाता है, इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं कि जो ह्यूमन की पेंक्रियास सेल का जो डीएनए है उसका जो पोर्शन, डीएनए का जो पोर्शन जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उस डीएनए को सेपरेट करके बैक्टीरियल डीएनए में इंसर्ट कर दिया जाता है, और फिर जो हमें डीएनए मिलता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है. उस डीएनए को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, जिसमें बैक्टीरिया का डीएनए भी होता है और ह्यूमन का इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले भी डीएनए होता है, वो स्ट्रेच होता है. सो ऐसे में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस होता है, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर से बैक्टीरियम में इंसर्ट किया जाता है. फिर ये बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई करता है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, और इसके अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जो डीएनए है वो डीएनए इसके बैक्टीरियम सेल के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. सो हम इस बैक्टीरिया के कल्चर से इस ह्यूमन इंसुलिन को जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है इसको आइसोलेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके प्योरीफाई करके ह्यूमन इंसुलिन को एज अ मेडिसिन इट इज गिवन टू द patients. So this is also another example. Okay, so the hormone this insulin was first such substance produced using the E. coli bacteria. Now some examples of genetically modified bacterium और हम देखते हैं और कौन कौन से bacterial the serum है. For example, insulin, just now I explained you from E. coli. Then the blood coagulating factor 8 for treatment of hemophilia A. Students, hemophilia A and hemophilia B, these are the diseases in which person's blood fails to clot. You know कि blood की एक बहुत ही natural जो है फीचर होता है कि जब भी हमें कहीं इंजुरी होती है या चोट लगती है तो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है. ब्लड की क्लॉटिंग आपने स्टडी किया है 8 में. ब्लड क्लॉट क्यों होता है? ताकि ब्लड का लॉस कम से कम हो, और ब्लड क्लॉट होने से एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर नहीं फ्लो हो पाता, क्योंकि ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड विच वी रिक्वायर इन आवर बॉडी. तो कुछ पर्सन्स की बॉडी में ये जो ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं ये नहीं होते हैं, और दैट प्रॉब्लम और दैट कंडीशन इज नोन एज द हीमोफीलिया, एंड दिस इज ऑफ 2 टाइप्स, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी. सो ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर 8 जो है वो एब्सेंट होता है हीमोफीलिक ए पेशेंट्स में, और फैक्टर 9 जो है वो एब्सेंट होता है हीमोफीलिया बी में. अब ये जो ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर 8 और 9 है, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय दिस
method by genetically modified bacteria, and they are the example of genetically modified bacterial serum. So these are all the examples of the serum. Now the next that use of the bacterium we will study in the vaccine. What is vaccine? I think you might have heard about the vaccine nowadays, that scientists are working very hard and doing the experiment to produce the vaccine against the coronavirus. You know, the novel coronavirus, COVID-19, against which the scientists of the that whole world, they are trying, experimenting to prepare the vaccine against that. So what is the vaccine? So the vaccine is a preparation of the live weakened germs used to produce active immunity against a disease. So वैक्सीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है लाइव वीकेंड जर्म. अब ये जर्म कौन से? जर्म मीन्स दे आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक कर दिया जाता है. वीक क्यों किया जाता है? बिकॉज जब वो वीक होंगे तो दे विल नॉट कॉज द डिजीज. और इन लाइव वीकेंड जर्म्स को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है. जब बॉडी में इनको इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होकर के इन जर्म्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर करता है. और ये एंटीबॉडीज जब भी हमारी बॉडी में ये स्ट्रॉन्ग जब जर्म्स और लाइव जर्म्स जब भी कभी एंटर करेंगे हमारी बॉडी में, तब ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी जो है उनको अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती है. तो ये है वैक्सीन का प्रिंसिपल. So understood children, a vaccine is a preparation of live weakened germ used to produce active immunity against a disease. It was first coined by Edward Jenner. So this vaccine, this term, it was coined by the Edward Jenner. He did the experiments on vaccine. The process of administering live weakened germ or microbes into the body for developing resistance to a particular disease, दिस इज नोन एज द वैक्सीनेशन. तो अब क्या होता है कि इन वैक्सीन्स को प्रिपेयर करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और इंजेक्ट करने के बाद ये हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप करती है. और ये जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है पर्टिकुलर डिसीज के लिए, वो हमारी बॉडी को फ्यूचर में जब भी कभी इन जर्म्स का अटैक हो, एंटर करें, तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीटॉक्सिन्स और एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग दिस लाइव वीकेंड माइक्रोब्स इनटू द बॉडी फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर डिसीज, दिस प्रोसेस इज नोन एज द वैक्सीनेशन. एंड वैक्सीन इज द प्रिपरेशन ऑफ लाइव वीकेंड जर्म्स यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्सीन. नाउ I'll share you here how is vaccine prepared. So in a very simple way I'll explain you here that the first the pathogenic microorganism, suppose it is a virus. So first scientists, they collect the information about the nature of virus, its DNA or RNA content, and the various properties of the virus. और फिर उस वायरस की बहुत सारी कॉपी बनाई जाती है. ओके, एंड देन आफ्टर उसकी कॉपी बना के फिर उसको जो है वैक्सीन फॉर्म में डेवलप किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, सेपरेट किया जाता है कल्चर से, एंड देन इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन. क्योंकि वैक्सीन की फॉर्म में कैसे करेंगे, बिकॉज दे कॉज द दैट सिम्टम्स इन द बॉडी. सो इनको जो है लाइव फॉर्म में ही एनिमल्स की बॉडी में सबसे पहले इसकी टेस्टिंग होती है. तो सबसे पहले सपोज यहाँ पे माइस दे रखे हैं, तो माइस की बॉडी में इन वैक्सीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रिपरेशन के बाद. क्योंकि वैक्सीन जब प्रिपेयर होते हैं तो डायरेक्टली ह्यूमंस पर नहीं अप्लाई किए जाते हैं, पहले वो एनिमल्स पर उसकी टेस्टिंग होती है. और एनिमल्स पर जब इन वैक्सीन का इम्पैक्ट देखा जाता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, वो रियली ये वैक्सीन जो है उन वायरस को बॉडी में डेवलप नहीं होने देते हैं. देन आफ्टर the clinical trials are conducted finally on the small that population of the humans, and then after they are prepared at a commercial level. So this is the process of preparation of vaccine. Now what are the examples of vaccine? So some examples I'm showing you here, like TAB vaccine for typhoid. It killed the
bacteria which causes typhoid, BCG vaccine for the tuberculosis. Okay, so this BCG vaccine, it killed the tuberculosis causing bacteria. So these are some examples of the vaccine. You know about the polio vaccine also, the polio drops also. They are also the vaccine against the that polio disease.